वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके साथ अपवर्क के हवाले से। आपको पता है अपवर्क जो है एक वेबसाइट है जो कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। जिस तरह आपके पास फाइबर freelancer.com वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आप फ्रीलांसिंग करते हैं। सेम इसी तरह आपके पास अपवर्क भी जो है एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कैसे अर्निंग करेंगे, आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ जाकर देखते हैं। जी, तो वीवर्स से इस वीडियो के अंदर बात करनी है हमने अपवर्क के हवाले से। अपवर्क क्या एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अब आप लोग यहाँ इसे सीखना चाहते हैं, यहाँ से काम करना चाहते हैं, तो फाइवर की तरह ही एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इनकी अपवर्क की। अच्छा, काम क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से अर्निंग करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल आपने काम करके देना होता है। जो आपके पास स्किल्स हैं, आप लोगों को जो है ना, क्लाइंट्स को वो काम करके देते हैं बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पे माइट नॉट बी हाई एंड अपवर्क टेक्स इट्स कट, बट दिस मार्केट प्लेस इज़ गुड फॉर कनेक्टिंग with clients and building your portfolio. What is Upwork? Upwork is a marketplace for freelancers in fields like writing, graphic design, and web development. The site helps professionals find projects, communicate with clients, and get paid. If you are a new freelancer or working with a new field, you can rack up valuable experience without always having to pitch clients cold. But the site is full new workers who are willing to take work for a lower rate, which can impact your earning potential. Overall, Upwork makes it easier to find jobs and make more money, but think carefully about which gigs you want to apply for. How to make money? Set up a robust and honest profile. Your profile serves the same purposes as a general resume for prospective employers. You can't get work without one. Fill out the job type you would like to do, the specific areas in which you are skilled, and your level of expertise. This is all self-reported, so be honest. If you get hired for jobs you can't deliver on, your account could be put on hold or closed. After that, add a headshot and a detailed description of your background. You can include links to a portfolio or to specific work samples. You can also fill in your education, how many hours per week you can work, location, and preferred rate. If you are not sure what to charge, check out the rates of other freelancers on Upwork who have similar experience. Upwork will typically approve your profile within 24 hours, assuming your profile is verifiable and accurate. Then you can get working. Choose a membership plan. Upwork offers two membership plans for freelancing: Basic and Plus. Basic plan is free, but you will pay to connect with potential clients. Freelancer on the basic plan receive 10 free connects each month. The platform internal tokens which are used to submit proposals to clients. You can also pay $0.15 for each additional connect, sold in bundles of 10, 20, 40, 60, and 80. Connects can be earned and Upwork sometime awards the tokens during promotion. A specified number of unused connects can be rolled over to the next month but expire if not used within 1 year. Plus, this plan is $14.99 per month and include everything is basic plan as well as 80 connects per month, visibility into what price competitors have bid for a job, option to keep earning confidential, ability to customize your profile URL, profile never hidden due to inactivity. Connect with legitimate employers. Use your Connect to submit proposals for jobs in your wheelhouse. Proposals should include an introductory letter, your desired fee, and answers to questions the client included in the posting. You can also send examples of any work you think would be relevant. Before applying for a gig, get an idea of the potential employer reputation. The Better Business Bureau, Glassdoor, and a search for news coverage of the employer on Google are good places to start your research.
ठीक है। तो आपने अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और पोर्टफोलियो अपना सारी लिंक अच्छे आपने क्रिएट करनी है, जो आप में स्किल्स हैं वो आपने लिखनी है। ठीक है, जिस तरह एक अच्छी सीवी आप बनाते हैं जॉब के लिए, यहाँ पर सेम आपने अच्छी प्रोफाइल बनानी है ताकि लोग इम्प्रेस हों, फिर आपसे जब उनका कनेक्शन हो, आपसे वो बात करें, तो कम्युनिकेशन आपका लेवल अच्छा होना चाहिए आपका, और आपको फिर उनका काम टाइम पे करके देना है। तो इस तरह आप आगे ग्रो करते चले जाते हैं, अच्छे रिव्यू आपके आते हैं जब। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।